Hello students, today we are discussing the chapters nuclei. In this chapter we are discussing only two things. One is the composition of nuclei and size of nucleus, mass, defect and mass equivalence energy, binding energy per nucleons. In which first topic is the composition of nucleus. Compositions means which elements forms nucleus. Here we see that nucleus is the composition of proton and neutron. Composition of neutron, proton and neutron. Suppose that an element is X ZA, where Z is all of you know that Z is known as number of proton or number of electron, and A is the mass number और इसको कहते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियंस. ए को हम लोग नंबर ऑफ न्यूक्लियन भी कहते हैं, मास नंबर भी कहा जाता है. उसी तरीके से जेड को हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कहते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं. और ए को मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियन कहते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियन. जेड ए माइनस जेड इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि ए में से जब जेड को घटा देते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है. तो मास नंबर इज कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ओके, अगेन वी सी दैट्स हियर size of nucleus. Size of nucleus means volume of the nucleus is directly proportional to the mass number of the element. मान लेते हैं कि if V is the nucleus volume of the nucleus, then this is directly proportional to A. This is directly proportional to A, where A is the mass number या number of nucleons. और हम लोग जानते हैं कि since we know that nucleus is spherical, therefore its volume is 4/3 pi r cube, which is directly proportional to A. R cube is also directly proportional to A, because 4/3 pi is constant, therefore we can write here R cube is directly proportional to A. Therefore we can write here R is directly proportional to A to the power 1/3. R is equal to R0 A to the power 1/3, where R0 is a constant. R is the radius of the nucleus of the given element.